Hello all. Hello all. Warm welcome to all of you to 11th session of Chess with Gaurav Bakliwal, Season-2 from Vivan from Mumbai, India. It's my privilege and honor to be a volunteer in today's session. Today's game was played in Luch between Rotlevi and Rubinstein. This game, also known as Rubinstein's Immortal Game, in 1907. After that, Gaurav sir will show us amazing move of the day. So without much wasting time, let's welcome our own Gaurav sir. Wow, very good, Vivan. What a nice introduction. Very well done, very good. So you can switch off your, yes, very good. Thank you so much, Vivan. And I am so very, happy, and I am so very privileged, and I feel so much of proud that the young talent of the country, people of 6.5 years of age, 7 years of age, they are so confident and they are trying to take the challenge, and they are volunteering such event, and they are trying to speak their best and in front of so many audience. When the event is being live streamed, it will be watched many various times later on as well. Thank you so much. Okay, and good evening. I can see a lot of good audience today. Good evening, audience. Okay, let us chat who all are there. Saket is there. Good evening, Saket. Sharvi, good evening. Jagrat, I can see. Aram, I can see. Rahul, Bhavya, good evening to Sai Jaswant as well. Okay, Umesh, Mr. Umesh is here. Good evening, everyone. Now, today, my dear friends, I have come up. Arisha Jain is here. Good evening, Arisha. I have come up with a very attacking game. And this was played by Rotlevi versus Rubinstein. And Rubinstein Immortal Game it is called as. And trust me, it is called by experts as encyclopedia of middle game combinations. So in this game, Rubinstein played so many amazing moves, all ideas of deflection, decoy, pin, knight fork, so many ideas, overloaded piece, and everything is there in this game. So I'm sure you guys will enjoy. And before I come to the game, let me tell you a little bit. Good evening, Aradhya. Let me tell a little bit about Rubinstein. I have told earlier as well. Rubinstein was a very strong chess player in 1900 to 1920 types era. And he is called by experts as the strongest chess player not to become the world champion. That is what is said about Rubinstein. So in modern time, there is one more player with the name of Ivanchuk. He's also compared as the strongest world chess player not to become the world champion. So Rubinstein belonged to Poland, and he was granted Grandmaster title when FIDE was incorporated later on in 1950, when FIDE awarded Grandmaster titles. Now, he could have been the world champion, but destiny does not want that to happen. And when he was trying to play the world championship match to challenge Emanuel Lasker, whom he defeated in various open tournaments, the tournament did not happen because the World War I broke out and the chess world championship was cancelled. Later on, after the World War, Capablanca and Rubinstein were supposed to play for the World Chess Championship. He was the challenger to Capablanca. And the tournament did not happen because he could not generate enough funds for it. So he was not to be, destined as a world champion. Coming to Rotlevi, Rotlevi was from Poland, and he was a very strong player. He was a master level player, international master level player. And he had, why does he don't want to become a world champion? No, it's not want, he could not. So coming to Rotlevi, he was also from Poland, and he was a strong player, and he was emerging player that time. And he came runners up in various open tournaments. He was ahead of Marshall. He was ahead of even Capablanca in some tournaments. But again, he could have done better than what probably he did. But then I was reading about it, and he had a lot of nervous system issues. And in the peak of his career, at the age of 31 years, he succumbed to his diseases, and he could not go further in chess. Anyway, so today's game,
is Rotlevi versus Robinstein. Let me share a screen with you and let us start this game. And I'm sure you guys will enjoy. I guarantee you, I guarantee. So, yeah, let's start. Vivan, I can see you now. Yes, very good. Okay, so this is Rotlevi versus Rubinstein. Rubinstein is in black. It is called as Rubinstein's immortal game. The game started with d4, d5, knight f3, e6, e3, c5. So far so good. All are normal moves, simple moves. And for the first 7, 8 moves, 10 moves, the game was very symmetrical. c4, knight to c6, knight c3. Now, black is not trying to capture the pawn on c4 because black is thinking that let the white bishop come on d3, and then I will capture it. So I will get one move in the process. Bishop to d3, one move is wasted, and then pawn into pawn. Again, the bishop has to capture. So one move I will try to waste. And this is the reason white is also not playing bishop d3 here. Yahi karan hai. White is also not playing bishop d3. So he is delaying moves. So see, knight c3, knight f3. So far, so good. These are meaningful moves so far. But now what to do? So here he captured pawn into pawn, and it is not very good actually. Probably a3 is better here, or even bishop d3 is good here, or even c into d5, c into d5. So this game is analyzed by Tartakover. This game is analyzed by Schletter. If you remember, he was the player who was playing Emmanuel Lasker. So maybe after pawn into pawn, knight into d5, bishop to b5, c into d4, and e into d4, bishop d6. This can be also one of the way of playing, equal position. So coming back to the game, my dear friends, e into c5 was played here, which is okay. And after bishop into c5, white continued with a3. So a3 is a good move. The idea of a3 is to play b4, no problem. Bishop b2, no problem. But the problem is that you are not developing your bishop and you are not doing castling. You are delaying it. So black is happy to play a6, no problem here. b4, bishop d6. Again, he is not playing bishop d3 as the same reason, with the same reason. Now here, bishop b2 was played in the game. Bishop b2. And I would like to tell the audience, and let me check the audience, and after checking, I can get the idea. Okay. Right. I have got a lot of students as well. So let me tell you that c into d5 is not a good move here. Please don't try to think that you are trying to get a pawn in the center. Please. So after c d5, d5, knight into d5, knight into, queen into. Don't do this, my dear friends. There is a very simple discover attack which will come in. Can anyone in audience write the move now? Very, very simple move. Arjun, Sharvi, well done. Jagrat. Bishop captures pawn. Yes, bishop capture pawn and check at the same time. Speak up, check. Vivan, speak up, check. 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 So if you do this, bishop into pawn is a check and the queen will go discover attack on the queen. So don't take these pawns in the center. I am telling you, and will you believe me if I say that few days back in one of the rapid games online, I did this mistake myself at this level after playing chess for some 32 years. So sometimes in lightning, in blades, such kind of errors occur. Anyway, so therefore this pawn is not to be taken, bishop to b2. And now castle was played by black here. And here queen d2 is played, which is a very bad move. First mistake and a very decisive mistake of white. Now Schlatter wrote a very bad place for the queen. Tartakover writes here loss of time.
the queen will soon have to seek a better square. The most useful move here is queen c2. So trust me on this, there is no logic of queen d2. This game is analyzed by not less than 30-35 experts on YouTube, if you can see the videos, and none of them is able to explain the reason behind queen d2. Very bad move. So one idea can be triple O, which is very bad, of course. After a3, b4, c4, if you play triple O, God help you. So queen d2 is a very bad move, of course, and he is just trying to delay bishop d3 because he feels that pawn into pawn, if played, the bishop will directly come to capture the pawn, and he is trying to delay it. That's the only explanation I can give you. So after queen d2, queen to e7 is played here. Again, the pawn is sacrificed. A very fine sacrifice of the pawn written by Schletter. If you capture here pawn into pawn, knight into, queen into, and rook d8, and after bishop e6, black has got a very nice game. Lot much compensation for the center pawn. White's king is in the center, pieces are not developed, and so on. So coming to queen e7, finally white played bishop d3. He realized that black is not capturing it. Let me go for bishop d3. And after pawn into, bishop into, pawn to b5, attacking the bishop, bishop d3, rook d8. Now queen to e2. So rook is here on the d5 along with the queen. Sooner or later you have to move it. Otherwise its x-ray attack might come in. So now see, queen d2, queen e2. Being white, you have lost a move here. You are losing tempo. Being white, you are losing tempo here. And after bishop to b7 and castle, my dear friends, can you see? It's a very, very, very symmetrical position. Can you please see this, audience? It's a very symmetrical position. Castle, castle, knight f3, knight f6, queen, queen, e6, e3, bishop d3, bishop d6, knight c3, knight c6, bb2, bb7, a3, b4, a6, b5, rook a1, rook a8. So it's a very symmetrical position. The only difference is that black's rook is not on f8, but it is on d8, point number 1. Point number 2, it is black to play instead of white. So ideally, technically, black is 2 moves ahead than white. Do you agree or not? Black is 2 moves ahead than white. Do you agree or not? Audience, please write chat in yes. Yes, yes, yes. Yes, sir. Yes, yes. Very good, audience. Yes, Vivan, speak up. Black is ahead. Yes, do you agree? Yes. Yes. So whenever you are ahead in move, if you are ahead in development, what should one do? Audience, can you write in chat? Agar black, attack is the answer. If you are ahead in development, please go for attack. Please try to take the initiative. Please try to take the initiative. And therefore, a very nice move was played by black, which is knight to e5. Well done, Arjun. Wow. Without asking me, he has written. So it clearly shows that he has seen this game. He was telling me yesterday that I have realized I have made out which game is this. And he's saying, no, sir, no. Okay. Chalo, I will of course trust you. Knight e5 is a good move here. Idea is knight f3, and if gf3, the pawn structure will break, and this bishop will become very, very active. This bishop will become very active as well. And knight e5 is played. So Schlatter wrote, introduced by Marshall and myself in a similar position with opposite colors, but with the extra move rook d8. So knight e5 is virtually forced over here, and after bishop e5. Tartakova is writing now, black threatens to win a pawn by bishop h2. Do you agree or not? Divan, black wants to capture bishop h2 here. मानते हो कि नहीं? Yes. अगर वो किंग से मारेगा तो क्या मूव है? Bishop captures pawn. Bishop capture pawn, king capture pawn, and then Sharvi is right, and then queen check आ रही है, queen check, और ये queen is d3 वाले bishop को मार देगा. So black is trying to capture a pawn here by playing bishop d6, bishop h2, queen d6, queen d3.
एक pawn मारने की threat आ रही है. So Tartakova is writing here, threatening to win a pawn by bishop into h2 check, king into h2, queen d6 check. White's next move provides against this, but loosens the king side defense. So Tartakova is also a great player. He has analyzed this game. Schletter, these guys have analyzed this game in detail. I am having the commentary of them in my computer on the beside the game. So f4 was played over here, trying to stop this diagonal, trying to open up the rook. And the problem with f4 is that you will have to play e4 sooner or later. Otherwise, black will play e5, and your e pawn can become a serious weakness on the semi-open file. So bishop to c7, no problem. So let's do some analysis in this position. If you play rook f d1, supporting d3, the game might continue h6, h3, rook a c8, rook a c1, bishop to a8, bishop b1, and bishop b8 with slight better position for black. Although it is not very good, very highly better, but slight better for black. So coming back to the game, f4, bishop to c7, and as I told you, e4 has to be played here. If you don't play e4, for example, if you go for rook a1, black will certainly play e5 here, certainly. And then this pawn semi-open file is a clear weakness. So e4 is okay, no problem. And after rook to a8, if you are attacking, get all your pieces in the party. If there is a party, invite all pieces. So it's like saying you are going for a war. Will you send only 1 or 2 soldiers for the war? No, you will send the entire battalion, entire forces, and so on. So this rook on a8 is not doing anything. Get it in party, and very soon it will also take part in the attack. Now comes the serious mistake of the game, pawn to e5. Very, very, very serious mistake. And now, will you believe the kind of moves which black has played? I'm sure you guys, whoever is watching it, for a big treat. You are in for a big treat now. Knight g4. Knight g4. Okay. So here, first, the correct move here should be rook a d1. There is no need to play e5 right now. And after bishop b6 check, king h1, the best move of black is h5, trying to play knight g4 and queen h4 with big advantage, big initiative, attack, and so on. This should have been the game proceedings, After e5, oh my god, I'm sure you guys will love it. First, Rubinstein developed the bishop, activated the bishop by check, and now this bishop is on this diagonal and the other bishop on the other diagonal. And it is so very scary, it is so scary. My god. Both rooks are on the open file attacking the pieces. And very soon the knight and the queen will join the party, very soon. So here comes the first poll, first poll for you. And Vivan, you will have to just observe. You can't participate in the poll today because you are volunteer. You will have to write on chat or you can speak the answer. An audience poll आ रहा है आपके लिए. Okay, let's launch the poll. Find the best move for black. Find the best move for black. A, knight g4. B, knight d5. C, knight d7. Or is it D, knight e8? Knight g4, knight d5, knight d7, or is it D, knight e8? Okay, please participate. इन 4 में से ही बताना है आपको. G4, D5, D7, E8. Knight H5 लिखा है अर्जुन ने. H5 पे जाके क्या करेगा वो? There is no threat. Knight G3 तो pawn से मार दोगे, फिर Queen H4 तो आती नहीं है. Pawn G3 will control the square. नहीं, अभी H5 करोगे तो नाइट मर रहा है ना बेटा. E5 पे pawn चली ना उसने. अभी तो नाइट ही मर रहा है सीधा. E5 into F6 पीस मर जाएगा.
विवान क्या लगता है आपको? नाइट C4. G4 लगता है. लेट्स एंड द पोल एंड लेट्स शेयर द रिजल्ट्स. 70% लोगों का मानना है G4, 20% D5, 10% D7 एंड 0% लोगों का कहना है E8. ओके, सो ऑडियंस इज राइट. करेक्ट मूव है नाइट G4. अब ये क्वीन से पिट रहा है कायदे से. इट इज बीइंग कैप्चर्ड. डायरेक्ट मार सकता है वाइट चाहे तो, डायरेक्ट मार सकता है. लेकिन रूबिनस्टेन का दिन था आज. इस गेम को अमर होना था. 115 साल हो गए आज इस गेम को, 115 साल. और ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगले 100 साल तक भी इस गेम को दिखाया जाए. तो नाइट G4. अब आप वेरिएशन देखो जरा लाइफ में. अगर आपने क्वीन इंटू नाइट मारा, तब मैं आपको वेरिएशन दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा. तो ब्लैक खेलेगा रुक इंटू बिशप. तो पीस पिटाया, पीस वापस मार लिया. और अब इस रुक से नाइट कैप्चर हो रहा है. द रुक C8 as well as रुक D3 आर बोथ ट्राइंग टू अटैक द नाइट ऑन C3. आफ्टर रुक A C1, this rook will come to D2, attacking the bishop and attacking G2 pawn as well. Oh ho, and it's all over. White must resign actually. It's all finished. Okay, what else? तो क्वीन इंटू G4 गलत चाल है, तो क्या करें? बिशप इंटू H7 चेक. किंग से मारेगा वो. क्वीन इंटू नाइट. ले, डायरेक्ट रुक D2 आ गया. डायरेक्ट रुक D2. 7th रैंक पे हाथी आ गया. नाइट बिशप B2 एंड रुक G2 दोनों अटैक. तो और क्या करे भाई? तो और करो भाई H3. व्हाट अबाउट H3? H3 पे मूव है क्वीन H4. आइडिया क्वीन G3, क्वीन H2. और अगर तुमने यहाँ पे क्वीन इंटू नाइट मारा फॉर एग्जाम्पल, तो वो मारेगा, मारा, रुक से बिशप मार लिए. और अब तुम्हें विश्वास है क्या ये मर रहा है दो जोर में? दिस इज माई आइडिया. ये आइडिया है. और अगर तुमने रुक C1 खेला, अरे यार इसको तो बचा लो, इसको तो बचा लो, तो अब तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा. विश्वास ही नहीं होगा तुम्हें कि देयर इज अ चेकमेट हियर. देयर इज अ चेकमेट हियर. यू माइट नॉट बिलीव. देखो, कैन यू बिलीव? हाँ, रुक H3 is a checkmate because this pawn is pinned by the bishop and the king cannot come to G1 because this bishop is attacking. And rook H3, what a nice checkmate. तो कमिंग बैक टू दिस पोजीशन, इसीलिए उसको यहाँ पे रुक D3 पे खेलना पड़ेगा किंग H2, ये मेट बचाने के लिए. एंड वी विल सिंपली कैप्चर द पीस ओवर हियर. एंड आफ्टर दैट black is clearly winning. He has two bishop for one rook, which is a big advantage for black. तो भाई करेगा क्या वो ले देके इस पोजीशन में? करेगा क्या वो? हाउ विल ही प्रोसीड देन? नाइट G4 पे क्या करें? ये मारना गलत है. गलत है. G3 तो कर ही नहीं सकता. रजनीकांत थोड़ी है. बिशप का पिन है, देखो, है ना? बिशप से राजा मर रहा है. इलीगल. एक ऑप्शन है नाइट E4. इस वाली डायगोनल को ब्लॉक कर दो. तो नाइट E4 पे मैं बताता हूँ ब्लैक खेलेगा क्वीन H4. अब ये मेट हो रही है. आजा बेटा तुझे प्यार दूं. तो H3, रुक इंटू D3. माय गॉड. क्वीन इंटू बिशप इंटू E4. माय गॉड. एंड नाउ क्वीन G3. क्वीन G3 इज द चेकमेट. क्वीन H2. बचता ही नहीं है, मारना ही पड़ेगा. और जैसे ही मारा, क्वीन H4 इज अ चेकमेट. बताओ कैसा खिलाड़ी है ब्लैक. पहले वो क्वीन G3 पे गया कि मार इसको, फाइल खुलवा, H फाइल खुलवा. एंड नाउ क्वीन H4 इज अ चेकमेट. तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन माय डियर फ्रेंड्स, ये पोजीशन में द ओनली गुड मूव इज बिशप E4 व्हिच वाज प्लेड बाय व्हाइट हेयर. काफी एनालिसिस के बाद, काफी टाइम सोच के, रॉटलेवी प्लेड बिशप E4. ये खेल लिया भाई साहब ने. Oh ho, and now the only idea, very simple idea, is Queen queen H4. H4. Idea queen H2 checkmate. Well done, Vivan. And now there are various options with white. बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है. क्वीन H4. उसने खेला गेम में G3.
अब ये आ गई चाल, क्वीन मर रहा है इधर। तो अभी भाई लोगों एक पोल की बारी आ गई है, क्या लगता है आपको? फाइंड द मूव प्लेड बाय ब्लैक। इस पोजीशन में क्या लगता है आपको? बिशप इंटू E4 चेक, क्वीन H2 चेक, क्वीन H3, और इज इट रुक इंटू नाइट, रुक इंटू C3? आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। पॉन टू G3 खेला गया है यहाँ पर, क्वीन अटैक हो रही है। रॉटलेवी वर्सेस रूबिनस्टेन, रूबिनस्टेन्स इमॉर्टल गेम। इट इज कॉल्ड बाय एक्सपर्ट्स एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मिडिल गेम, जो आप तक थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग ही गया होगा with the analysis which I have shown you. Bishop into E4 check, Queen H2 check, Queen H3, or is it Rook into C3? Find the move played by Black. Queen H2 check कई लोगों का कहना है, 44% लोग as of now. Queen H2 करोगे वो क्वीन से मार लेगा बेटा, उसकी क्वीन खुल गई, फिर क्या मिलेगा आपको? बोलो। हाँ विवान बोलो, विवान। Rook C3. रुक C3, विवान का कहना है रुक C3. इज इट द राइट मूव? ऑडियंस बहुत कम लोग, 18% ऑडियंस है रुक C3 पे। ओके, लेट्स एंड द पोल एंड लेट्स शेयर द रिजल्ट्स। 45% लोगों का कहना है क्वीन H2 चेक, 18 आर गोइंग फॉर बिशप इनटू E4 चेक, क्वीन H3 एंड रुक इनटू C3। हो, तो ये कहानी है। चलो ठीक है भाई लोगों, तो G3 was played over here। अब हम एक काम करते हैं, we'll come back to G3। अब यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम पहले। क्वीन H4 से H2 मर रहा है, तो और क्या क्या ऑप्शन है इसके पास मार बचाने के? तो इनफैक्ट दो ही ऑप्शन है, या तो G3 या तो H3। तो अगर उन्होंने H3 खेला होता, H3, तो गेम नहीं, तो गेम क्या चलता? तो गेम होता रुक इंटू 9, रुक C3 मारता है आइडिया, रुक H3। तो रुक C3 पे अब क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, करेगा क्या लाइफ में? तो रुक C3 पे ऑप्शन है क्वीन इंटू नाइट, पहला ऑप्शन। इन दैट केस वो खेलेगा रुक इंटू H3 चेक, क्वीन H3, क्वीन H3 चेक, G-H3, बिशप इंटू E4 चेक, किंग H2 एक ही घर है, चेक। माय गॉड, रूबेनस्टेन, किंग G3 एक ही घर है, चेक। किंग H4 एक ही घर है, चेक। बिशप टू D8 एक ही घर है, और आजा बेटा तुझे प्यार दूं, बोरे भैया तो वार दूं, और ये यहाँ आके मात हुई है। कैन यू बिलीव द आइडिया? ओ माय जीसस क्राइस्ट, व्हाट अ गेम। ये फोर्स मेट है ये। अगर आप यहाँ पर H3 खेलोगे, वो रुक C3 मारेगा, क्वीन G4 पे, ये फोर्स है। ऑल दीज आर फोर्स एनालिसिस, ये सब फोर्स एनालिसिस। तो गेम में क्या हुआ? H3 रुक C3 अगर होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है बिशप C3। बिशप C3 पे ब्लैक करेगा यहाँ पे बिशप इंटू E4, और अब ये डायगोनल पिन हो रही है, क्वीन H3 का आइडिया जा रहा है। और अब अगर आपने क्वीन G4 मारा, जो कि फोर्स है, विच इज वेरी फोर्स, तो नाउ द गेम विल बी क्वीन इंटू G4 एंड रुक टू D3 अटैकिंग द बिशप, और ये बिशप फ्री का मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि इफ यू ट्राई टू प्रोटेक्ट द बिशप, then there is a rook H3 checkmate, the pawn is again pinned। तो ऐसे जीत गया भाई। तो कमिंग बैक टू दी पोजीशन, ये पोजीशन के पहले आएंगे हम, और यहाँ पे हमने ये साबित कर दिया कि H3 इज नॉट पॉसिबल, और इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट ने खेला G3। बहुत सोच के खेला रॉटलेवी ने G3, मगर इट वाज अ डे ऑफ रोबिनस्टेन। एंड नाउ मैंने पोल कराया था, और बहुत सारे लोगों ने क्वीन H2 कहा था, वो अच्छी चाल नहीं है, वो क्वीन से मार लेंगे। अब बिशप E4 भी नहीं मर रहा, क्योंकि नाइट का सपोर्ट है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखो, H2 पे क्वीन का सपोर्ट है, E4 पे भी क्वीन का सपोर्ट है, लेकिन E4 पे C3 का भी सपोर्ट है। ये प्रॉब्लम है। तो मुझे C3 को हटाना है। C3 इज द मेन डिफेंडर। तो डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर करके एक कॉन्सेप्ट होता है। तो विवान ने जो चाल बताई थी, द करेक्ट मूव हियर इज रुक इनटू C3, व्हिच वाज प्लेड बाय ब्लैक।
एंड ही इज नॉट बॉदर्ड ऑफ हिज क्वीन, कह रहा है मारना है मार ले तू, कोई नहीं। अब रुक C3 पे ऑप्शन क्या क्या है उसके पास? एक तो ऑप्शन है G into H4 जो कि उसने गेम में खेला, दूसरा ऑप्शन है बिशप into C3 जो कि चेकमेट हो जाएगी। कैसे? अभी क्वीन ओवरलोडेड हो गई, ओवरलोडेड पीस, दिस इज ओवरलोडेड, ये यहां भी बचा रही है H2 एंड दिस इज सेविंग E4 एज वेल। सो बिशप into E4, क्वीन E4 एंड क्वीन H2 इज अ चेकमेट। तो कमिंग बैक, रुक C3, बिशप C3 इज वेरी बैड, वेरी बैड। तो फिर दूसरा ऑप्शन यू कैन ट्राई बिशप into B7। तो इसमें कैसे मेट है? इसमें मेट है रुक G3। भाई साहब, ओ हो, अब आप करोगे क्या? यू कांट कैप्चर दिस पॉन बिकॉज इट इज पिन, एंड माय सिंपलेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड इज टू प्ले रुक H3 एंड रुक H2। मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, धीरे, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। दिस बिशप इज सो वेरी डेंजरस, सो वेरी डेंजरस। तुम आग कैसे बचाओगे? तो कमिंग बैक, रुक C3, इन्होंने मार लिया पॉन इनटू क्वीन, ये मार लिया इन्होंने। और अब उन्होंने कहा बेटा मार करके दिखाओ, अगर तुम बिशप से बिशप मारोगे क्वीन से मार लेंगे, रुक H3 खेलोगे तो भी हम कुछ कुछ करके इस पे डिफेंस लाएंगे, कुछ तो चलेंगे दुनिया में, ऐसे थोड़ी है। और बिशप से बिशप मार ही रहा है, बिशप से रुक मर ही रहा है, सब अटैक में। ये पोजीशन आ गई भाई साहब बोर्ड पे। एंड हियर कम्स वन मोर पोल, वेल, व्हाट इज द मोस्ट अमेजिंग मूव which was played by Rubinstein here? Oh my god, this is immortal game because of the move played by black here. अब जो चाल चली है ब्लैक ने, can you believe? Can you find the most amazing move played by Rubinstein here? The very strongest player Rubinstein in the era of 1900s, who did not become the world champion. तो अब ऑडियंस मुझे समझ चुकी है, बिशप इंटू E4 चेक, रुक H3, रुक E3, एनी अदर सुपर अमेजिंग मूव को सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं। 75% लोगों ने चुना है। उनको पता चल गया अब तक कि यार जब भी अमेजिंग का होता है ना, तो सर एनी अदर अमेजिंग, एनी अदर अमेजिंग, एनी अदर अमेजिंग। ओके, बताओ भाई, जागृत मोदी चैट पे लिखो और कौन कौन है। साकेत लिखो, उमेश सर लिखो, साई जसवंत, आराध्या, अनुज, हर्षवर्धन, शार्वी, विवान बताओ, विवान क्या मूव है इस समय? रुक D2। एनी अदर सुपर अमेजिंग मूव? विवान ने बताया रुक D2, जागृत ने लिखा है रुक D2, नाइट F2, so many answers. So let's end the poll and let's share the results. 20% लोगों का कहना है रुक H3, रुक E3, और 60% लोगों का कहना है एनी अदर सुपर अमेजिंग मूव। Okay, and now can you believe the move now? Rook to D2 was played here. क्वीन से रुक मर रहा है, इस बिशप से रुक मर रहा है, ये बिशप से बिशप मर रहा है, और इस क्वीन से नाइट मर रहा है। सब कुछ मर रहा है तेरे प्यार में डार्लिंग, और इस एक क्वीन हम ऑलरेडी मरा चुके हैं। ओ हो, कैसा खेल है ये। और अब कर लो एनालिसिस। तो अगर उन्होंने क्वीन इंटू G4 किया, मान लो क्वीन इंटू G4, तो सिंपल मेट है बिशप इंटू E4 एंड इट्स ऑल ओवर। इस डायगोनल पे कोई डिफेंस नहीं है, ये डायगोनल पे कोई डिफेंस नहीं। तुम आ सकते हो आने को, रुक F3 बीच में, बिशप से वो भी मरेगा, सब कुछ मरेगा। तो अब वे क्या करें? चलो दूसरा देखते हैं। अगर उन्होंने बिशप इंटू C3 मारा तो मेट कैसे है? तो मेट है बिशप इंटू बिशप, क्वीन से मारना ही पड़े, एंड रुक H2 इज अ चेकमेट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वीन, आई वांट योर किंग। मुझे राजा चाहिए तुम्हारा, क्योंकि ये जो बिशप B6 है, दिस इज अमेजिंग, ऑसम बिशप। तो कमिंग बैक, रुक D2 पे और क्या ऑप्शन है भाई साहब? भाई साहब ये नहीं मार सकता, ये नहीं मार सकता, क्वीन E1 करे, क्वीन E1। कम ऑन यार, ये तो एक मिनट है, इसमें क्या बकवास है? तो इसीलिए बिशप B7, ओहो ये भी ट्राई कर लो, बिशप B7, इसमें वो सिंपल क्वीन मार लेगा,
And now rook h2 checkmate का idea है. Bishop g2 is the only move. And now black will play rook h3. And there is no defense to rook h2. There is no defense. If you play bishop h3, the bishop is moved away from the second rank, rook h2. This rook will do a mate. तो ये सारे आइडियाज लग रहे हैं भाई साहब भगवान आइडियाज. तो इसीलिए गेम में क्या हुआ, गेम में इन्होंने मार लिया क्वीन d2. ही कैप्चर द रुक. बोले यार अब मर तो रहे हैं, जो मिल रहा है उसको ही मारो. एंड आफ्टर बिशप इनटू बिशप चेक, king cannot come to g1 because this bishop is there. There is no meaningful idea of queen g2 or rook f3. Rook f3 is out of question. He played queen g2, only move to defend mate. And black could have won the game by bishop g2, rook c2, rook b2, but no, black wants to do a checkmate here. Can you believe? He wants to do checkmate. Can audience write the move now? क्या लगता है आपको, क्या करा होगा रूबिनस्टेन ने? And white resign. Rook h3. Rook h3. Vivan, speak up. Yes. Rook h3. सबने लिख भी दिया है. अनुज, शार्वी, उमेश सर सबने लिख दिया है. अर्जुन, साकेत. Rook h3 played by black. Can you believe the idea is to play rook h2 checkmate with the support of knight? The queen cannot do anything because it is pinned by the bishop. It can neither capture rook nor the knight. If it captures the bishop, rook h2 is checkmate as it is. And in this position, at rook h3, Rotlevi shook hands and he submitted his resignation. What an amazing, amazing game it is. Rotlevi versus Rubinstein. So I'll just show you the game again very fast. Let's see this again very fast. So far, so good. Now see. Oh my God. Two bishops. My God. Destroying the defender. Deflection. And now finally resign. Okay, so I hope you guys enjoyed the game. Please write in chat if you guys liked it. I will tell you in the next session we'll have on 7th of May, Saturday, not the next, but next to next Saturday. There is one more amazing game which I have found out, which is on the lines of this game itself. Okay, it was amazing. Yes, sir. Yes, sir. Very beautiful. So now, thank you very much, audience. Let's go to the brilliancy here. The Morphe's brilliancy. Black to play. Black is Morphe here. So this is Bird versus Morphe. And Morphe was an unofficial world chess champion, the first world chess champion. But that time there was no official chess body. And he was definitely the strongest player. Definitely. So, and even now when we say Morphe's moves, Morphe's games, they are very high level, sophisticated moves, you know. So it is black to play here. And it's a very, very tough move to find. What did Morphe played here? Black to play. So many ideas are there. So let's do a very small poll here. I'm sure answer you all know beforehand. So what awesome move do you think black played in this position? A, bishop b4, B, bishop a3, C, rook to b6, or is it any other super? 100% of the audience have already answered. Any other super amazing move? Bishop b4, bishop a3, rook b6, any other super amazing move? 100% of the audience. 9 on 9, 10 on 10. 100% of the audience. Okay, so when audience is so smart, let's see the move played by Morphe here. Any other super amazing move? So Mr. Umesh has written a very good move in the chat. Very well done. And can you believe the move played by black is
rook into f2. Can you believe? Oh my God, what is this? Vivan, can you believe this move? No. What kind of move is this? He is giving a rook free of cost. What is the move? What is the idea? And after bishop into f2, Umesh sir, can you write the move now? Yeah, I understood your idea, no problem. Can you write the black's move now? Can you write the black's move now, Umesh sir? Because you wrote rook f2. So you must have had some idea. Oh, wow. Bishop Can you believe the idea? B5. No, the move is, Anuj Shah, you are right as well. Can you Bishop believe F5. a3 is the move now? My God, Vivan, what kind of moves are these? So now the idea of rook f2 was to remove the bishop from the third rank so that the queen can come in the attack. And if you capture here, of course you will not. But if you capture, then it's a one move checkmate. It's a clear case of a checkmate. So obviously you can't capture queen a3. And if you can't capture, my idea is to play queen b2 check with the support of the rook. That is what I want to do. Can you believe, audience? What kind of players are these? Oh my God. Awesome. So what is the defense on queen a3? What can be done? Queen b2 is a checkmate. Queen c3 is one idea here, but again, it's not very good. And after queen a2, bishop to f4, there can be another mate ideas coming up, bishop b4, so many ideas. Okay, so c3 was played in the game, which is the best defense. And let us first look at queen g5. Because Anuj also wrote, I guess, remove queen somewhere. Jagrat is saying remove queen somewhere. So on queen g5, rook b2 is the move. King to d2, bishop to b4 check is the move. Again, you have to come king c1, there is no other square. And rook b3 is a checkmate here. So your removing queen somewhere does not help. The only good idea is c3, which was played in the game. And after queen a2, the idea is again queen a1 and rook b2. b4 was played in the game. Best defense. And now queen a1 check, king c2, queen a4 check, king to b2. There is some analysis. If you want, I can show you. If you play king c1 here, a5 is the move. So still black is a rook down, and white has managed to exchange queen, but then this pawn become very dangerous. So even this is a losing position for white. Clear winning for black. So coming back, queen a4 check, king b2 was played in the game. And now the winning move is bishop b4. He is giving one more piece. So white thinks that he has got two rook and a bishop for a queen, which is very good. But see how things will fall apart. This bishop will also join the party very soon. So after king c2, e3 was played by Morphew. So he is giving up connected pass pawn. Don't worry of the material. Play for the development of the pieces. So after bishop e3, bishop f5, rook d3, queen c4, king d2, queen a2, king to d1, and queen b1, white resigned in this position because now queen h1 is going. My God. And after that, these things will also fall apart. This is a very danger pawn as well. Amazing, amazing idea, rook f2. Trust me, guys, when I saw this game and when I saw the move, I was not able to figure out rook f2. The best I could was bishop b4, and I checked computer, this is also winning. Clear winning, bishop b4. And when I played rook f2 in the computer stockfish, initially it gives very small advantage, minus 0.7.
but then later on when I play queen a3, then it increases to -7, -6. So even these moves are so tough, initially even the computer is not able to, judge them well. What a brilliant move it is. Amazing. Enjoyed or not? Divan? Yes. Audience, मजा आ रहा है कि नहीं? Audience? Yes. Okay, अब आ रही है भाई लोगों होमवर्क की बारी. And I must tell you again, I am very disappointed. मेरे को 3 ही लोगों के मेल आए हैं और एक का भी करेक्ट आंसर नहीं है. ऐसे मत करो यार. प्लीज प्लीज आंसर भेजो. और ये टफ तो था, मैं मानता हूं. ये टफ सवाल है यार. हाउ टू गेट दिस पोजीशन इन एग्जैक्ट 4 मूव्स. ये टफ है भाई. बट यू हैव टू ट्राई. देखो, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड ट्राइंग. इफ यू ट्राई, दोनों तरफ से तुम्हें ही चलना है. एंड इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इंट्यूशन, visualization, all these things. How to get this position in exact 4 move. White चलेगा पहले, फिर black, white, black, white, black, white, black, और ये पोजीशन आनी चाहिए बोर्ड पे. तो अब कैसे आएगी? आंसर बताता हूँ. टफ है भाई. अब देखो, ध्यान से देखो. ओके, तो पहले व्हाइट करेगा d3. अरे बहुत टफ है यार, बहुत टफ है. ब्लैक चलेगा e5. और अब तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा व्हाइट क्या चलेगा. यू वोंट बिलीव योर आईज. अब व्हाइट चलेगा बिशप टू h6. माय गॉड, माय गॉड. और अब ब्लैक चलेगा क्वीन g5. क्या बकवास है ये. अब व्हाइट खेलेगा तीसरी चाल क्वीन c1. अब ब्लैक उसको मारेगा क्वीन इंटू क्वीन. तीसरी चाल, ब्लैक की तीसरी चाल. अब ये जो बिशप उसने बाहर निकाला था जिससे कि क्वीन अंदर घुस जावे, जिससे कि क्वीन अंदर घुस जावे, ये बिशप उसी को वापस मारेगा और अपनी जगह आएगा. चौथी चाल. और अब ब्लैक अपनी चौथी चाल चलेगा वो पोजीशन लाने के लिए f6. बताओ, विश्वास हुआ क्या तुम्हें? ये बिशप ऐसे भूला बैठा है, एकदम ऐसे भूला. मैंने क्या किया? मैं तो कुछ किया भी नहीं. जबकि यही है बिशप जो यहां से h6 जाकर जगह देकर और वापस पीछे आया है और शांति से ऐसे बैठा है. व्हाट डिड आई डू? आई डिड नॉट डू एनीथिंग. जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं हो जाते, अचानक फेस बना लेते हैं पेरेंट्स के सामने. नहीं, मैंने नहीं, और कुछ नहीं, मैंने नहीं किया कुछ. बताओ यार, कैन यू बिलीव माय डियर फ्रेंड्स? जागृत इज राइटिंग अनबिलीवेबल. तो ऐसे सोचोगे यार, आइडियल, बहुत मजा आएगा इफ यू कैन क्रैक ऑन योर ओन. वापस देखो, लेट्स डू इट वन मोर टाइम. एक और बार. पहली चाल है d3, e5, बिशप h6 जिससे कि क्वीन अंदर आवे, क्वीन g5. अब हमें क्वीन पिटानी है. क्वीन c1, उसकी भी क्वीन पिटेगी. क्वीन इंटू बिशप इंटू. अब ये आके अपने आप आके बैठ गया. f6. 4 चाल में वी हैव गॉट द डिजायर्ड. बताओ विवान, अनबिलीवेबल है कि नहीं भाई? Yes. करा था क्या तुमने? डिड यू ट्राई और नॉट? Yes. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अभी गाइस होमवर्क किया करो. आज वाला जो मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ, इससे टफ क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. अब मैं 2 हफ्ते का ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि आज के बाद हमारा अगला सेशन 7 मई को होगा, 7 मई सैटरडे. तो तुम्हारे पास में 7 और 3 10 वेडनेसडे तक में देना है. नेक्स्ट वेडनेसडे तक 10 डेज का टाइम है. प्लीज सॉल्व. जितना दिमाग लगाना है लगा लो. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. अब क्वेश्चन क्या है? अरे यार, माय गॉड. अब यार क्वेश्चन ये है, ये पोजीशन है बोर्ड पर. दिस पजल इज क्रिएटेड बाय वर्नर कीन, अ क्लासिक पजल क्रिएटर. वर्नर कीन, उन्होंने ये पजल क्रिएट किया है. एंड दिस पजल वाज गिवन द फर्स्ट प्राइज अवार्ड इन द पजल कंपटीशन व्हिच यूज्ड टू हैपन अर्लियर. फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया गया था इसे. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुन लो पहले, बहुत ध्यान से सुन लो. दिस इज अ पोजीशन. क्वेश्चन पूछा गया है,
आखिरी चाल किसने चली है? व्हाइट चला है या ब्लैक चला है? पहला सवाल तो ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लेड लास्ट? आखिरी चाल जो है वो इस पोजीशन में कौन चला होगा कि ये पोजीशन बोर्ड पे आई? लास्ट मूव व्हाट, हु हैज प्लेड, ब्लैक और व्हाइट? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, क्या चला गया है? व्हाट वाज द मूव? तुम्हें लगता है व्हाइट ने चला है, तो क्या है, कौन सी चाल चली गई है? व्हाट वाज द लास्ट मूव? एंड क्वेश्चन 3 जो सबसे डिफिकल्ट है, हाउ कैन दिस पोजीशन अकर ऑन द बोर्ड? तुम्हें पूरा रेट्रो एनालिसिस करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये पोजीशन बोर्ड पे आई कैसे होगी। स्टार्टिंग से दोनों खेले व्हाइट और ब्लैक, नॉर्मल चेस, और ये पोजीशन बोर्ड पे आ गई, कैसे आ गई? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब तुम थोड़ा सोचो, ये किंग यहाँ कैसे घुस गया? ये घुसा कैसे राजा? यहां से तो आ नहीं सकता, चेक चेक लगेगी, यहां से आएगा नहीं, घुसा कैसे राजा? तो अब तुम दिमाग लगाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अबे राजा यहीं से आया होगा, ये ऐसे 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 अंदर आया ये, ओहो, और ये ऊंट घोड़े, घोड़ा बाद बाद में लाए होंगे हम, और राजा यहाँ से आया होगा। तो अगर राजा यहाँ से आया है तो किसी ने तो लिखा है अर्जुन ने B6 चली है। अगर B6 आखिरी में चली होगी, मतलब B7 पे ही पॉन पड़ी है, तो राजा फिर घुसा कैसे? इसका मतलब B6 तो पहले से ही चली गई है, तभी राजा आएगा। अब ये ऊंट यहाँ अंदर कैसे घुस गया? हाउ कैन द ऊंट कम हेयर? ऊंट तो आ ही नहीं सकता अंदर। अगर ऊंट यहाँ से आया है तो राजा कैसे आ गया? आखिरी चाल ऊंट यहाँ से आया, तो उससे एक चाल पहले क्या चला होगा? अब ये तुम्हें बहुत दिमाग लगाना है, तब तुम्हें कहानी समझ में आएगी क्या हुआ। क्वेश्चन क्लियर है ऑडियंस? कैन यू राइट इन द चैट? क्वेश्चन क्लियर है विवान आपको? Yes. ये पोजीशन बोर्ड पर कैसे आई? आखिरी चाल कौन खेला और क्या खेला गया है? ये क्वेश्चन है। यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल है, 10 बार देख लो, 10 बार रिपीट कर लो मेरे को, सो आवाज बार बार सुन लो मेरी, क्वेश्चन बार बार सुन लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करो। और 14 दिन का टाइम है, हमारा अगला सेशन होगा सैटरडे 7 मई। ओके, और अब आएगा आपके सामने विवान, कैन यू स्पीक अप? बोलो। What? Okay. Thank you, sir, to give me opportunity to volunteer into this session. I enjoy a lot. I am happy. वेरी गुड, वेरी गुड, Thank you, audience. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू विवान, थैंक यू सो